आइए हम फिर से याद करें, क्योंकि वर्तमान युग में क्रिया योग जिसके माध्यम से मानव के बीच में आया है, योगावतार लहरी महर्षि। महातार बाबा प्रत्यक्ष आते नहीं हैं, लेकिन महातार बाबा लहरी महर्षि को स्वीकार किए कि इनके माध्यम से क्रिया योग फैले। और स्क्रिप्चर कौन लिखेगा? ज्ञानावतार स्वामी गिरी। ये चयन महातार बाबा ने किया। और महातार बाबा फ्रंट में नहीं आते, उनकी आप फोटो नहीं ले पाएंगे, आने की आवश्यकता भी नहीं है। उन्हीं के संदेश को लहरी महर्षि अच्छी तरह से प्रचारित किए और वही चीज स्वामी गिरी लिखे। तो लहरी महर्षि ने क्या कहा है, फिर ध्यान से सुनिए। अनसीजिंग प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योगा। अनसीजिंग का क्या अर्थ है? लगातार। तो लगातार कैसे करेंगे? आज इसको समझिए। चूंकि ये समय वहां पर लोग इंतजार भी कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, जिनको हिंदी नहीं आती है, तो आपको 2 मिनट हम बताने के बाद पहले अंग्रेजी में बताएंगे, फिर हिंदी में। क्योंकि भारतीय संस्कृति है कि जो दूर होता है उसको आदमी पहले याद करता है, नजदीक वाला तो है ही, हम भारतवर्ष में तो है ही। यहाँ तो ऐसे भी है कि 6 ऋतुएं अपने अंदर की आध्यात्मिकता को बढ़ाती रहती है, लेकिन बाहर के राष्ट्रों में इतने प्रकार की ऋतुएं नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है, तो वहां मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए हम लोग समझें कि अनसीजिंग प्रैक्टिस कैसे करें। अनसीजिंग का मतलब लगातार। लगातार कौन सी चीज है, किसका अस्तित्व है? परब्रह्म का। सर्वव्यापी कौन है? परब्रह्म। अगर हमारा कनेक्शन, ध्यान परब्रह्म पर टिका है, तभी हम लगातार प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं यहीं तक इसको सुनिए हिंदी में, अब अंग्रेजी में बताएंगे हम। अगर अंग्रेजी आप सुनिए, समझ में आए या ना आए, जो प्रत्येक शब्द है, जैसे ये ऊर्जा की तरंगे हैं, मान लीजिए कि शब्द की ये ऊर्जा है, ये इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। तो आपको आवाज सुनने से अर्थ है, उसका अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में सुनते सुनते आपको अंग्रेजी आ जाएगी। जब मैं लोगों से कहता हूं कि हम नॉर्थ अमेरिका में गए, अंग्रेजी में क्लास ले ही नहीं रहे थे, अंग्रेजी कभी भारत में बोले ही नहीं थे, हिंदी माध्यम में पढ़े थे, साइंस हम पढ़े थे अंग्रेजी में, वही बीएससी से। तो साइंस की अंग्रेजी अलग होती, बोलचाल की अलग होती। तो वहां जा करके लहरी महर्षि, स्वामी गिरी, इन सब की जो एक शक्ति है सर्वव्यापी, उसकी वजह से अंग्रेजी बोलना आ गया। जैसे आपने देखा होगा, जब परमहंस योगानंद अमेरिका जा रहे थे, जब शिप में उनसे कहा गया व्याख्यान देने को, तो 10 मिनट खड़े रहे, आवाज एक भी नहीं निकली। तो अंदर से आवाज आती है, गुरुदेव कहते बोलो, बोल ले जाओगे। तो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले थे, लगता ही नहीं था कि अंग्रेजी नहीं आती। इस तरह से आप अंग्रेजी भाषा के अर्थ को मत समझिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आवाज है उसको जाने दीजिए कानों। तो उससे 2 चीज होगी, एक तो अनकंडीशनल किसी से जुड़ने की आदत होगी, अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ आए या ना आए लेकिन हम सुन रहे हैं। और दूसरी चीज, ये विश्वास करिए, प्रत्येक आवाज की कोई भी यूनिट है, या प्रकाश की कोई यूनिट, या कोई भी विचार की कोई यूनिट, उसे पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। Now I'm going to explain first in English that we have to follow Lahiri Mahasaya. Why? Because in every yuga there is incarnation, big incarnation, prophet. Lahiri Mahasaya is
in ascending Dwapar Yuga is the great prophet avatar. He is a yoga avatar. How to unite, how to bring unity, the science has been given by Lahiri Mahasaya. Mahatar Baba selected Lahiri Mahasaya to do this important work, and Mahatar Baba selected Gyanata Samik Tirshagiri also to impart Kriyayoga meditation as well as to write a scripture, holy science. This is the important point, we should know it. If Mahatar Baba selected to Lahiri Mahasaya, not for writing any text, that's imparting Kriya Yoga, giving Kriya Yoga, and Ikteshagiri giving Kriya Yoga as well as writing scripture. Now, what is our duty? In this present age, we have to follow Lahiri Mahasaya. What is his idea? Unceasing practice of Kriya Yoga. What is unceasing? Unceasing means continuous. What is the continuous in the cosmos? Something must be existing continuous. That continuous, we call it omnipresence. Omnipresence means unceasing, means continuous. It means Kriya Yoga science must be omnipresence. If Kriya Yoga science is not omnipresence, you cannot follow this principle. Unceasing practice of Kriya Yoga, you cannot do it. Therefore, wherever you are, you can practice Kriya Yoga. In awake, in sleep, in dreaming, in working, in resting, all the time you can practice it. But why we find difficult? Because we do not understand what is the meaning of omnipresence nature of Kriya Yoga. What is the meaning of unceasing practice of Kriya Yoga? And it means, who is omnipresence? Parabram. Parabram is omnipresence, formless spirit is Parabram. Then Parabram is omnipresence. It means Kriya Yoga knowledge and Parabram both are one. It means you are practicing Kriya Yoga sincerely, all the time trying to practice more and more unceasing practice. It means we are practicing presence of Parabram. Parabram means God, what we say. Therefore, try to understand in this way. Let us make some diagram. This is, you can say, this is the Parabram. It represents Parabram. Then put here O. O means omnipresence. Because here there is no beginning, there is no end. This is the one circle. This is the Parabram. Parabram is omnipresence, means he is here. When you feel breath, in the breath, Parabram is there. Everywhere in all our head to toes, in each and every tension, relaxation, changes, whatever we feel, on the platform of hearing, touch, vision, taste and smell, everywhere you will find Parabram. If I look at you, Parabram is with you. If I see this earth, this sky, anywhere, Parabram is there. I take a portion of some structure, Parabram is there also. Dry leaf or green leaf, Parabram exists in both. Suppose that there is a leaf, and this leaf you cut a small pieces in this one piece, and this is the complete leaf. Parabram exists in this leaf. Parabram exists in the part also. If you cut into pieces, in that also is there. If Parabram is all in all, have this concept. And if Parabram is there, if you do not like Parabram,
it means you are not able to practice this unceasing practice of Kriya Yoga. If you have no honor, respect to Parvam, note it down, read any textbook, remember it. You can give good lecture, you can write 1,000 books, but you cannot practice Kriya Yoga correctly. For example, you are here as somebody in North America, South America, or Europe, Africa, anywhere, China, Japan. If I have any complaint with anyone, remember, we cannot practice unceasing practice of Kriya Yoga. If you criticize anyone, if trying to prove anyone that you are not good, guarantee you cannot practice it. Therefore, try to observe this principle. Few years, how many years? Just start, you will know how many years. Try to have no complaint, never have any discussion, any talk to prove anybody is bad, never have any complaint with anyone. Just you practice Kriya Yoga and serve. You are able to maintain this, and guarantee in this life you will reach to the height of Lari Master. When you will reach to that height, what is going to happen? Willing departure. Whenever you will plan, then you will depart from this physical universe to invisible universe. And when you will plan, you will come back. Even these masters, like Lari Master, Jnanata Samiktisyogi Paramahansa Yogananda, I am taking 3 now. They are full masters. They have decided and they have to leave and when they have to come. You can also do that, but we are busy in thinking of others, finding fault in others, criticizing others. It means you have decided not to reach to that height. Okay, all right, if you are not able to reach in that height, do not worry. In some life you will reach, maybe after 1,000 lives or after 1,000,000 lives, but you have to be there. If all waves, small or big waves, they have to merge with the ocean. No wave can say, no, I am independent. I will not merge with the ocean. If you start from now, immediate, try to serve and do not try to degrade anyone. Oh, you are servant. Oh, you are low paid staff. Oh, you are not good. Oh, you are weak. Oh, you are old age. Oh, your habit is not good. Oh, you are smoking. You are drinking alcohol. You are eating meat. You are very bad. Never say it. You have no right to say anything, only you have to serve. If you have decided to reach to the height of Lari Master, if you have not decided, all right. Let us imagine that we have decided. Then try to understand this. This is called the omnipresent Parabram. This and this circle, it represents each and every point is beginning and end both. If beginning and both are the one, then it represents omnipresence. Therefore, I have written whole letter. The first creation is around. I am making a half circle only. This creation is very great. It enjoys fellowship of Parabram. Now let us, in this creation, how many will be there? You can imagine there is 100. Out of 100, if 10 are really nearer to this, then 10 will feel oneness with God, like Jesus Christ, like Buddha, like Mahatma Gandhi, like Lahiri Mahasaya, Jnanathar, Sikteshwari Paramahansa Yogananda. Like this, you will call them Christ, Bhagavan, Avatar. But out of 10, if 90 are little far away, then they are prophet, they are very good, but their intensity of perception of truth is less. But still they are in circle number 1. And here you will find only Anand, bliss. This is called the Anandamay field. And second, let us have second about
Here, we human beings who are having intellectual knowledge, this is the number 2, who works with the logic. 2 plus 2 equal to 4, 1 plus 1 equal to 2, like this logic. If there is a day, there must be night. If there is a loss, there will be gain. If there is a sin, there will be virtues. Working on the logic, this number 2, both human being structure is there, but here they experience bliss. Out of 110 is having 0 complaint. They are called Christ. They are called complete big incarnation. We call it Bhagavan. And rest 19, they are having fellowship, but they have not reached to that height, like this. But still, they belong to the number 1, blissful stage. Second, all human beings having logic. In that logic, what we prove? Oh, he is very good. I know it, but no person is perfect. That person must have some shortcomings. He is very bad, all right. A very bad person will have some goodness. This is the logic interpretation by the human being in this. Why I am repeating it? Again, many questions are asked. Therefore, number 2 is called intellectual group. This number 2 is called intellectual. Intellectual means in means inside, tell. Someone is telling, but what they are telling, I may not be able to hear. Therefore, one say intuition, this first one, it belongs to intuition. What is intuition? That is the perfect, no mistake in listening. Intuition means perfect teaching, perfect tuition. In this intellectual, there is no perfect teaching, only discussions. So this is intellectual group of human being. This is intuitive group. Now third is belong to the animal kingdom. All variety of animals, microscopic or macroscopic, very small, very big. Therefore, number 2, suppose that in this there are 100. Out of 100, maybe 30 is in contact with the number 1. They will do good. They will try to good. They will feel good. But out of 90, they have more contact with the 3. They will work like animal. What is the behavior of animal? Animal is, they are not wise. They have their limited knowledge. Therefore, this number 2, some are having animal tendency, some are having going towards angelic tendency. But if number 2 is not practicing oneness with the Parabram, that person cannot realize this ultimate truth, that nothing is impossible. In this one, if out of 100, if only 10 is following, 90 is not following. 90 has to practice more. In number 2, if out of this 100, suppose 30 are following, 30 will realize what is the good work, but they will not be able to do because they are not practicing oneness with this. Oneness with this means we are going to learn unceasing practice of Kriya Yoga. Here, this is complaintless life. It is God has become bacteria virus. I have complained with the bacteria virus, then I cannot reach to this stage. I will have problem. I have complained with the lizard. In my room, lizard is there. I can't sleep. That means I am not here. I am not following here. Lizard is something non-toxic. They don't harm. They come only to clean. They just try to consume the small insects. They has to be uplifted. Therefore, see number 1, number 2, remember it. Therefore, number 2 cannot promise that they are going to learn how to have willing departure, willing incarnation, until these human beings should practice oneness with this omnipresent.
Therefore, number one, number two, both have to practice oneness with omnipresence. One will find easy, two will find hard. And number three, this is the animal. Animal, they cannot practice. They don't have the power to practice spirituality. But they have power to influence number two. Therefore, number two, the human being, many behave like animal, like carnivorous animal. Like animal who is not carnivorous, herbivorous, but mentally dull. They don't have any idea. Therefore, this is called third, animals. We call it here, mind is developed, senses are developed, but reasoning power is not developed. Reasoning is not developed. With their mind and senses, these animals, they work. Because there is no reasoning power, they cannot do research. They cannot practice Kriya Yoga. They cannot practice to work like angelic person or to work like human being. The number four is called plant kingdom. Here all kind of plants, microscopic, macroscopic. There only life force is active, prana. Only prana is active, nothing else. There is no active mind, no active sense organs, no active reasoning. Only prana is active. Therefore, they cannot work like animals. They cannot work like human beings. And they cannot practice Kriya Yoga. Now the fifth. This is the last, I will not explain it. Fifth is called, it is the field, it is the area where all kind of energy waves, atom molecules like galaxy, solar system, sky, air, mountain, ocean, lake, everything, they come in this. We human beings are here. When we connect our intellect, our reasoning power on this fifth, then we are not doing good research, we are doing bad research. We are making atomic bomb, we are making missile, we are making weapons to fight. Therefore, this number two person should practice oneness with omnipresence, Parbrahma. And they will use their intellect, their reasoning, their mind sense organ, how to help all creations, not to damage. But this number two, if they follow number four is called plant kingdom. They start sometimes behaving like plant. What in nature of plant? See, banyan tree is standing. Somebody is going to harm. Somebody is going to cut. But is standing, not moving. Banyan tree will not come here to give shadow, to give greenery, or to give little comfort. No, they don't have power to come. Sometimes we human beings, we have like that. We know how to do everything, but we will not do it. We are sitting like mountain, sitting like plant. We can go from here to there to help, but we will not go it. It means they have complete effect of plant kingdom. This atomic kingdom means energy kingdom, molecular kingdom. But then what we should know, we are here. If you are here, very easy we will do. If you are here, we will struggle to do it. That struggle is called yuddha. Mahabharata yuddha means practicing oneness with omnipresence consciousness. How to practice? Practice is very easy. Try to believe, accept nothing exists, only Parbrahma exists. The legs and arms and back, abdomen, chest, neck, face, head, and you and everybody. It is Parbrahma, nothing else. Follow this practice. If following this practice directly, you are here, you are connected here, then you will do all activities to help mountain, ocean, lake, river, to help solar system, galaxies,
sky, air, everything, to help plant kingdom, animal kingdom, if we practice oneness with this. To practice oneness with this very easy job. Don't accept it is body. Don't accept you are man, human being. Don't accept you are male or female. You are child or adult. You are old age or young. Forget it. Whatever you are, Parabram is manifesting in your form. Now, what is my aim? To serve. We practice this in this life. We have decided now to reach to that height. Now you are safe, liberated. You have no fear. Complete state of fearlessness you will enjoy. और इसको थोड़ा हिंदी में बताने जा रहे हैं, क्योंकि याद रखिए जब लहरी महाशय कहते हैं अनसीजिंग प्रैक्टिस करिए, लगातार अभ्यास करिए, कैसे करें? लगातार कौन सी चीज है? परब्रह्म हर जगह है, सर्वव्यापी है। अब क्रिया योग लगातार करें तो कैसे करेंगे हम? इसका अर्थ है कि क्रिया योग ऑमनी प्रेजेंट है, क्रिया का नेचर है ऑमनी प्रेजेंस। तभी लहरी महाशय ने कहा कि अनसीजिंग प्रैक्टिस, अनसीजिंग का मतलब ऑमनी प्रेजेंस। ऑल राइट, नाउ प्रैक्टिस क्रिया होगा। How to practice? Why we are doing so many mistakes? I was practicing that person created problem in the life. I was practicing that animal created in the life. I was practicing, but immediately one wolf came into the room. Then what can I do? Some snake came, cobra, very difficult. I lost my practice. The how to have safe mode for practice, that you have to learn. Now this is, try to understand this. Again, I am repeating it. This is called the Parabram. This is diagram. What is nature of Parabram? Omnipresence. Therefore, I have written O. O is called the circle. Circle is called omnipresence. This is the beginning and this is the end also. And you have to write omnipresence, let's make a circle. Therefore, this is called the omnipresence circle. If you are here, you will feel oneness with God. Suppose that we are not here, we are little away. This is number one. This number one, this very great height. We call angelic kingdom. Here everybody has bliss, joy, a state of fearlessness. But suppose that there are 100 people, out of 110 are very nearer to this, then 10 will be called as Christ, Avatar, Bhagwan, like Krishna, like Ram, like Buddha, Mahatma Gandhi, like these are Avatar, Lahiri Mahasaya, Kriyayoga Practice, Yoganand, Kabir Sahib, Guru Nanak Dev, these are avatars. They feel oneness with the Parabram, very nice, but many are very good, but they are not feeling that oneness, and they have to practice Kriya Yoga. But they will feel very easily they will get it. Now number two, this omnipresent consciousness is manifesting in the form of number one, angelic kingdom. Number two, human being working with the intellect. This number one working with intuition. Intuition means tuition from inside. Tuition means clear knowledge. Intellect means logic. From inside somebody is telling, but you do not know what they are telling. You have to use logic to understand. It's called the intellectual group of human being. This intuitive group of human being. In intuitive group also, they have to practice Kriya. They should not leave. They should practice every day oneness with the Parabram. And number two, intellectual. They have to practice. Very important for them to practice. Otherwise, they will place their consciousness on number three, animal kingdom. They will have more nature of this animal kingdom. देखिए फिर हम अंग्रेजी में बताने लगे। देखिए ये omni present परब्रह्म है, ये एक से अनेक होने क्रम में नंबर एक में आए आनंदमय कोश। यहाँ सब जैसे बहुत ऊंचे तरह के मानव जो राग द्वेष नहीं करते हैं, जो सेवा भाव में लगे रहते हैं। मान लीजिए 100 लोग हैं, इसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो परब्रह्म की अनुभूति करते हैं, उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। मान लीजिए राम और कृष्ण, बुद्धा, महावीर स्वामी, कबीर दास जी, गुरु नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, महात्मा गांधी, लहरी महाशय, ज्ञानधारी कृष्णगिरी, परमहंस योगानंद। जब कहते हैं महात्मा गांधी तो लोग डाउट करते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद को मानते हैं। वही परमहंस योगानंद महात्मा गांधी की दीक्षा देने के बाद
उनका पैर छू रहे हैं, कह रहे महात्मा पैगंबर आपके हाथ भारत सुरक्षित है, कैसे आप डिनाई करेंगे? वही परमहंस योगानंद महात्मा गांधी को पैगंबर कहते हैं। अंतिम दिन जब महासमाधि में प्रवेश करने जा रहे थे, उस दिन के अपने उद्बोधन में, अपने संदेश में पहला वाक्य यही बोलते हैं, यहीं से बोलना शुरू करते हैं, आई एम नॉट हियर इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी। हम यहाँ पर कोई एडवाइस देने के लिए नहीं आए, क्योंकि एक मीटिंग थी, सब लोग जुड़े हुए थे, सभी देशों के थे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स थे। सो आई विल रिलेट फ्यू स्नैचेस ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। इससे अपने जीवन के कुछ अनुभव को हम सुनाएंगे। पहला पॉइंट लिखा, आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी, द ग्रेट प्रॉफिट ब्रॉट ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस। परमहंस योगानंद अगर महात्मा गांधी को प्रॉफिट कह रहे हैं तो आपको मानने में क्या दिक्कत है? तो परमहंस योगानंद को ना मानिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी ना पढ़िए। जब इसका नाम लेते हैं तो लोग बौखला जाते हैं। जब परमहंस योगानंद ने कहा है तो कौन इनकार सकता है? इसलिए इस जो प्रॉफिट है, जो हायर रैंक में है, उससे महात्मा गांधी भी है, राम और कृष्ण है, ईसा और बुद्धा है, कबीर साहब गुरु नानक देव जी हैं, और ये सब लाहड़ी महाशय, ये तो सब है ही। लेकिन बाकी लोग जो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं वो भी नंबर 1 में हैं, आनंदमय कोष में। उनको लगातार अभ्यास करना है कैसे परब्रह्म के साथ एक बने रहे। और नंबर 2 में जो इंटेलेक्चुअल है, जो लॉजिक्स करते हैं, जो इंजीनियर, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सब लॉजिक वाले हैं, उनको तो अनिवार्य रूप से क्रिया योग करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। कि सोते कि अगर ये दिखाएंगे क्रिया तो कहीं लाड़ी महाशय के लोग ज्यादा ज्ञानी ने कहें अब प्रोफेसर तो हम हैं, साइंटिस्ट हम हैं, हमारे कोई वजूद है? हाँ है वजूद, लेकिन आपको मृत्यु पर विजय नहीं है। एक दिन अचानक आप चले जाएंगे, लेकिन अगर लाड़ी महाशय की क्रिया को सीख लिया तो आप अचानक नहीं जाएंगे, स्वेच्छा से जाएंगे, स्वेच्छा से आएंगे। इससे जो नंबर 2 के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़ लिख करके ज्ञान अर्जित करते हैं या कुछ खोज करते, साइंटिस्ट हो जाते हैं, जैसे न्यूटन थे, आइंस्टाइन थे, ये सब माया के नियम बनाए हैं। ये शाश्वत नियम की रचना नहीं कर पाए हो। जितने साइंटिस्ट है ये सब माया के नियम बनाए हैं। इसे कोई साइंटिस्ट खुश नहीं है, कोई को इनको दुख सताता रहता है। इसलिए इस क्रिया को अगर पकड़ लेंगे सारे साइंटिस्ट लोग, सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे प्रोफेसर, सारे पढ़े लिखे लोग जो किताबों पढ़ करके ज्ञान अर्जित करते, जो किताब लिखते, और सबको क्रिया का अभ्यास अगर अनसीजिंग प्रैक्टिस में जुड़ गए तो जीवन में एक जो भ्रम है खत्म हो जाएगा। अगर नहीं जुड़े यहाँ से तो उनका काम है अपने को व्यक्त करना, तो कहीं वर्णन करेंगे जीव जंतु का, कहीं बैक्टीरिया का, वायरस का गलत शिक्षा देंगे। हमारी बीमारी के कारण बैक्टीरिया वायरस, याद रखिए बैक्टीरिया वायरस बीमारी दूर करते हैं, तो बीमारी पैदा नहीं करते हैं। किसने कहा पैदा करते हैं? क्या लाहिड़ी मासा ने तो नहीं कहा, स्वामी तेश्वर गिरी ने नहीं कहा, जीसस क्राइस्ट ने भी नहीं कहा, महात्मा गांधी ने भी नहीं कहा। महात्मा गांधी कभी दवा खाई ही नहीं, कहते राम की शक्ति हमको ठीक करती है, विष्णु की शक्ति। क्या बुद्धा दवा खाते थे? कोई लिखा तो नहीं कहीं कि दवा खाए हो। कबीर साहब, गुरु नानक देव जी कभी दवा आदि नहीं खाए, उनको पता था कि बीमारी होती ही नहीं है। बीमारी कारण क्या है? हमने मन से सोच लिया कि बीमारी है तो हो जाती है। ये कैसे होगा? जैसे रात्रि में आपने सोचा स्वप्न में पहाड़, तो पहाड़ आ गया, पहाड़ तो आया लेकिन बड़ी गर्मी है, जंगल नहीं जंगल भी आ गया, प्यास लगी पानी भी मिल गया, अरे कहीं टाइगर ना आ जाए, टाइगर सोचे टाइगर भी आ गया, कहीं टाइगर दौड़ाए ना, दौड़ा लिया, अब क्या करें, भगवान बचाए, बचा भी दिया। कैसे बचा दिया? लगता है टाइगर खा जाएगा तो आंख खुल जाती है। सपने में कोई मरने की चीज नहीं देखता है, जब मरने को होता है तो जग जाता है। इस तरीके के साथ देखिएगा नंबर 2 के लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग, जो पढ़ लिख रहे हैं, विद्यार्थी लोग, अगर ये क्रिया को सर्वश्रेष्ठ महत्व नहीं देते तो फंस जाएंगी, तो पूरे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। ये 2 के लोग इंटेलेक्चुअल लोग 3 से जुड़ गए, एनिमल से,
तो एनिमल की ऐसी व्याख्या करेंगे, बड़ी निंदा वाली व्याख्या, बैक्टीरिया ठीक नहीं, वायरस ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, हमारी गाय है ठीक नहीं है, दूध कम देती है, हमको दूध ज्यादा चाहिए, तो उसका हम जीन अल्टर कर दिए, जो 3 लीटर देती तब 30 लीटर देने लगी। वाह देखो हमने इतनी बड़ी चीज पा गए। ये सब उल्टा सीधा करते हैं, उसे जानवरों को दिक्कत, पेड़ों को दिक्कत। फिर एक लोग रिसर्च करते हैं पेड़ पौधों पर, सारे पेड़ पौधों की नस्लों खराब कर देते हैं। इसलिए नंबर 2, इंटेलेक्चुअल को अनिवार्य रूप से क्रिया से जुड़ना चाहिए। लेकिन इंटेलेक्चुअल्स करते क्या है, सबके अंदर कमी देखते हैं। जो किसी के अंदर कमी ढूंढा देखा, गारंटी है वो क्रिया का अभ्यास करेगा तो ठीक ठीक नहीं कर पाएगा। इसे जो नंबर 2 इंटेलेक्चुअल है, ये क्रिया का अभ्यास रेगुलर पूरी भक्ति से करते रहे, कभी न छोड़े, तब देखिए उनके द्वारा पेड़ों की सुरक्षा, जानवर की सुरक्षा, पेड़ों की सुरक्षा अपने आप होगी। फिर पहाड़ कटना बंद हो जाएंगे, जो पहाड़ों को काट करके गिट्टी बनाते हैं बंद हो जाएगा, जरूरत नहीं इसकी। हमारा गांव है, हम मिट्टी खोद करके पाट लेंगे, मिट्टी मुलायम होती है, पका लेंगे, ईंट बना लेंगे, उसकी बनाएंगे सड़क। पहाड़ क्यों काटेंगे भाई? कितना दिमाग तेज हो जाएगा, कितना पेड़ लगाएंगे, किसी पेड़ में सूखते जाएंगे, सूखे पेड़ से लकड़ी मिलेगी, इतने जानवर पालेंगे, उनके द्वारा चीजें हमें एक कंडा वगैरह बनेगा, उपलियां बनेगी। किस तरीके से, इससे हमारा कहने का मतलब क्या, अनसीजिंग प्रैक्टिस का मतलब जो पहला सूत्र है होली साइज का, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, यही अभ्यास करिए बस। हिंदी अंग्रेजी में शार्ट में हो गया, अब इसको दोहराएंगे नहीं। कल से हम इस विषय को हम यहीं पर विराम देंगे, कुछ दिन अभ्यास करते जाइए। आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न करिएगा, बताएंगे। लेट अस प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग फॉलोड बाय स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन। 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई ले ढीला करें, let us bow down to our devotion we have in Kriyayoga Meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। ये क्लास आज के लिए, कल हम लोग फिर मिलेंगे। जो लोग सुबह दीक्षा ले चुके हैं, उनको कुछ उसमें समझना है, तब बैठे हैं, आ जाइए पीछे की तरफ।